Respected Chairman, education is the key to progress, especially higher education, which provides the cutting edge and skilled manpower. But quality of higher education is declining and is a matter of concern for all stakeholders as well as for the whole nation. The students who complete the UG and PG courses have very low job opportunities. Another serious issue is the gap between demand and supply, implying that youth are not eligible for job market. This leads to widespread unemployment among the higher educated graduates. To improve the quality of education in India, we must maintain parameters of quality of education. The parameter of quality education are sufficient number of quality faculty members, profile of students entering into the higher education, infrastructure of the education institution, curriculum, appropriate teaching method, examination pattern, learning sources, national agencies, government policies, and institutional leadership. India is one of the largest education systems of the world. Therefore, different stakeholders must work through these parameters on their respective level to maintain and improve the quality of higher education in India. India higher education has expanded in quantity but lacking behind in terms of quality. India cannot progress until the higher education system is qualitatively among the enough, because the poor quality is resulting in low employability, low performance of specialized individuals, lack of innovative and creative ideas, which are the key elements stresses the progress and present time. In all, there is need to enlarge the adaptive capacity, quality of higher education system so that more responsive to the changing world of the work and meet the diversified needs of the economy, both domestic and global. For that purpose, diversification of Indian higher education and training system has to be pursued in goal. This can be achieved by the having proper mix of public and private, formal and informal, non-formal institution. In this view, therefore, we urgent attention review the main aspect related to the quantity concern higher education. श्री राघव जड्डा जी। सर, आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं।